Hello everyone, good evening. केमती अच्छो सबू? How are you all? Start करिबा? Is my voice audible? Clear अच्छी? गोटे बस yes लिखी दियो, then we'll start. Okay? 13th April रू 19th April जहाँ भी हमरो current affairs अच्छी from SSC banking perspective. Okay? MCQ format रे तो हमें discussion करूँचे जेमती सेमती MCQ format रे ही आज पूरा discussion करिबा. Okay? Around 30 टा questions मैं रखी छी. Try करिबा जल्दी जल्दी 30 टा questions answer करिया को मते chat box रे. Okay? तो चलो start करिया. प्रथम क्वेश्चन हैला R-37M missile was developed by which country? को country तमरो ए मिसाइल टा डेवलप करिछि? कमेंट रे आंसर देबा को ट्राई करो. एंड प्लीज टिके जल्दी जल्दी आंसर दबो. इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ना नॉर्थ कोरिया? के जानछ? अच्छा ठीक अच्छे. देखो R-37M रशियाज लॉन्ग रेंज स्काई रिपर है. तो यहाँ कहार क्वेश्चन पचार एटा किए डेवलप करिछि? तो यहाँ तुम रशिया मिसाइल आर लिखाई सिंपली से तुम गेस कर R-37M मिसाइल मन भी रखिपर आर अच्छी माने रशिया. ओके तो ये मिसाइल टा हमर रशिया रो लॉन्ग रेंज लिखाई बुझिपरथबो लॉन्ग रेंज. सो लॉन्ग रेंज माने तुम ये तार देखि परथबो तार रेंज टा पाखापाखि रोची 300 ରୁ 400 किलोमीटर आउ तार स्पीड रोची मैच 6. दैट मीन्स दिस इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल. एटा भी क्वेश्चन रे पचारि पारे एटा को टाइप रो मिसाइल बेस्ड ऑन स्पीड. तो एटा होची गोटा हाइपरसोनिक मिसाइल. मार्च नंबर होची 6. ओके रशिया बनैछि. एटा होची गोटे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल. ए सब जिंस हम टिके टिके डिस्कशन करिछु. एयर टू एयर एयर रे स्ट्राइक हबो एयर रू ही से लॉन्च हबो. सो एयर टू एयर मिसाइल एटा गोटे लेंथ वेट ए सब जिंस एठी मेंशन अछि. ओके सो R-37M होची रशिया रो. सेकंड क्वेश्चन साल्विन रिवर रिसेंटली न्यूज रे थिला. साल्विन रिवर that was recently seen in the news originates from which region? Karakoram range, Tibetan plateau, Arakan Yoma, Western Ghat. को region रो तमरा साल्विन रिवर ओरिजिनेट होची? ट्राई करो आंसर करिया को. सब आंसर मु कहि दिले भल लागिबनी. ट्राई करो ठीक हो भूल हो डजंट मैटर बट टिके ब्रेन को एक्सरसाइज करके आंसर देबा को ट्राई करो. डायरेक्टली तुमको जगार ना पचारिनी बट से रीजन रो ना पचारि. साल्विन रिवर एनी आइडिया?
एनी आइडिया? नहीं देखो, it is also known as Nu river in China and Thalwin river in Myanmar. It is a transboundary river in Asia shared by China, Thailand and Myanmar. तो तीनटा कंट्रीज ए रिवर को शेयर करुचंती. ए फिगर तुम आउ टिके क्लियरली देखि परिबो. तो नु रिवर मु कहली राइट. तो एठू तार ओरिजिन चाइना रो ओरिजिन, चाइना रो हेकी तुम एठी देखि परथबो थाईलैंड को भी जाउची एंड एठी तमरो म्यांमार रो भी जाउची. ओके, थाईलैंड रो बाउंड्री को टच करिकी जाउची. सो साल्वेन रिवर जहाँ नु रिवर बोली भी कह जाए चाइना रे, चाइना रू ओरिजिनेट होची एंड तमर एटा म्यांमार आउ थाईलैंड देकी क्रॉस करूची. ओके अच्छा, बाय द वे एटा न्यूज रे कोन पे थिला, न्यूज रे कोन पे थिला कि सेठी जो जो मिनरल्स गुडा को देखिया को मिलथिला, बहुत टॉक्सिक मिनरल्स देखिया को मिलथिला, सेथि पे एटा न्यूज रे थिला. ओके लागू
ओके सो थाईलैंड म्यांमार आउ चाइना राइट ए तीनटा कंट्री रे पास करूची साल्वेन रिवर अप्रोक्सीमेटली जदि आमे देखिबा 2400 किलोमीटर लॉन्ग and it is the longest free flowing river in Southeast Asia हैला so सेति के हमर जानिबाटा निहाती दरकार थिला so this is the route for the Nu river or Salween river अच्छा तो आंसर कोन बाबा देबे एटी क्वेश्चन पचार थिला कि काराकोरम रेंज तिब्बतन प्लेट्यू आराकाम योमा वेस्टर्न घाट्स so obviously eastern himalayas China रो ओरिजिनेट होची so this is from the Tibetan plateau answer will be Tibetan plateau okay next question answer करिया को ट्राई करो उमियाम लेक recently news रे थिला is located in which state इंडिया रो को स्टेट रे तमे देखिया को पाओ उमियाम लेक अरुणाचल प्रदेश आसाम सिक्किम मेघालय जो माने भूली बाबू जाइछे से माने जानि थिबो से जगह को सो बेसिकली तमे जदि एठी देखिबो दिस इज इन योर मेघालय ओके मेघालय रे उमियाम लेक देखिया को मिले सो दिस इज न्यूज रे कोन पे थिला कि जो लोकल लोक माने थिले से माने प्रोटेस्ट करथले बिकॉज़ सही जगह रे तमर गोटे लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट हबर थिला तो सेटा ता अगेंस्ट रे माने प्रोटेस्ट करथले सेति पयना न्यूज रे थिला तो एंड जेहेतु गोटे जिंस न्यूज रे अछि तार जियोग्राफिकल लोकेशन जानियाटा निहात इंपोर्टेंट राइट सो उमियाम लेक को बारा पानी बेली भी कहा जाए ओके बारा पानी बेली भी कहा जाए आउ दाम सेत बेली भी तंग लोकल भाषा रे कहंती इट इज अ सीनिक रिजर्वर ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिलोंग इन मेघालय ओके तक जेहेतु एटा गोटे रिजर्वर काइंड ऑफ जिंस तो एटा 1960s बना हिथिला बहुत अर्ली एटा बना हिथिला ड्यूरिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ए उमियाम उमत्रु हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट टाइम रे जिंस रे बना हिथिला ओके तार सराउंडिंग रे तमे ईस्ट खासी हिल्स देखिया को भी पाई परिबो ओके उमियाम लेक इज इन मेघालय एटा हमरा आंसर हबो डी उमियाम लेक इज इन मेघालय नेक्स्ट देखिबा हमें आउ कोन नॉर्थ ईस्ट रे हमरो इंपोर्टेंट लेक्स गुडा को सब अछि माधुरी लेक संगेतसर लेक जाको हमें कहू दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश हाई एल्टीट्यूड लेक इन तवांग ओके आउ पलक लेक गुटे अछि दिस इज इन मिजोरम मन रखिबो पलक उमियाम लेक मेघालय संगेतसर लेक अरुणाचल प्रदेश पलक लेक मिजोरम ओके लोकटाक लेक एटा तमे बहुत फेमस जानिथिबो इट इज इन मणिपुर चांदुबी लेक गुटे अछि आसाम रे गारो हिल्स पाखरे आसाम रे यू हैव ए चांदुबी हिल्स ओके पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भितरे तमरो पलक लेक आसे व्हिच इज इन मिजोरम ओके एटा बहुत फेमस तमे सुनथिबो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क व्हिच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड दिस इज आल्सो इन लोकटाक लेक मणिपुर ओके अच्छा Apis mellifera that was recently seen in news belong to which species को species को belong करे Apis mellifera को species को belong करे spider frog honeybee ना fish जानछो देखियो आंसर So basically, एटा तमे देखि परथबो they belong to honeybee species. So recently, a new set of protocols and scientific interventions have been developed in honeybee farming in Jammu and Kashmir, which allows beekeepers to rear colonies in sub-zero temperature. Sub-zero temperature रे भी सेमाने rearing करि परिबे. जम्मू एंड कश्मीर रे तो तमे sub-zero temperature देखिया को पाओ, तो सेही temperature रे भी सेमाने डेयरिंग करि परिबे ओके एंड सेति पे सेमान को दरकार एपिस मेलिफेरा तो एपिस मेलिफेरा मन रखिबो दिस आर ए स्पीशीज फ्रॉम द हनी बी फैमिली ओके स्पीशीज फ्रॉम द हनी बी फैमिली
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व आउ किछि डाटा भी एठी अछि। साइंटिफिक नेम कौन? एपिस मेलिफेरा। ताको इंट्रोड्यूस करा जायथिला खास करके इंडिया रे 1983 रे इंट्रोड्यूस करा जायथिला हनी यील्ड पाई बिकॉज ऑफ देयर पॉलिनेशन एबिलिटीज। ओके, झपसा देखा
ओके सॉरी टिके नेटवर्क इश्यू थिला ओके मे बी कोन गुटे टेक्निकल इश्यू थिला आउ थे स्टार्ट करबा किछि असुविधा नै आमे को क्वेश्चन रे थिलु आमे थिलु क्वेश्चन नंबर 4 रे अछु बेसी आगु को जाइनो एपिस मेलिफेरा को स्पीसीज को बिलोंग करे तो दिस बिलोंग टू स्पीसीज हनी बी ओके तार साइंटिफिक नेम ही एपिस मेलिफेरा तार एमतिरे ताकू वेस्टर्न हनी बीज आमे कहू ओके नेक्स्ट देखो कॉलोनल शेरजंग नेशनल पार्क is located in which state? Sherjang National Park सुनिचे केबे is located in which state? Right answer हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला. कौन है आंसर? देखो कोठी अछि? It is in हिमाचल प्रदेश. ओके सो हिमाचल प्रदेश रे हमें देखिया को पाऊ कॉलोनल शेरजंग नेशनल पार्क. न्यूज रे कोन पे थिला बिकॉज़ द हिमालयन प्रदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रिसेंटली से माने क्वाश करले गोटे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो थरे की डेजिग्नेटेड पंचायत लैंड अराउंड दैट पार्क सेटा थिला तमरो हैला इको सेंसिटिव जोन हिसाब रे सेठी से माने कहिथिले आ जदी सेटा गोटे इको सेंसिटिव जोन हे जाय देन सेठी लोकल माने को बहुत प्रॉब्लम देखिया को मिले तो सेठी में लोकल माने कंप्लेन करथिले कि द प्रोसेस बाईपास्ड पब्लिक कंसल्टेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर राइट्स टू यूज कम्युनिटी फॉरेस्ट्स ओके से माने यूज करि पार नथिले लोकल पीपल से मान को प्रॉब्लम एया थिला तो सेठी पे एना न्यूज रे थिला एंड दैट इज व्हाई पर्टिकुलर नेशनल पार्क टे इम्पोर्टेंट जानी थो को स्टेट रे बिलोंग करे इट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. अच्छा सिंबल बारा इज स्मॉल नेशनल पार्क इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश एडजॉइनिंग हरियाणा कलेस्टर नेशनल पार्क. ओके आको गोटे सेंचुरी हिसाब रे डिक्लेयर करा हितला 1958 रे नेशनल पार्क हला एटा 2010 रे. नेक्स्ट देखो मुथुवन ट्राइब सुनिचो ना मुथुवन ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच रीजन को रीजन रे तमे देखिया को पाओ मुथुवन ट्राइब ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न घाट छोटा नागपुर प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट को रीजन रे हमें देखिया को पाओ. सो देखो प्रथम तो कथा न्यूज रे कोन पे अछि सो मुथुवन ट्राइब और मुथुवन कम्युनिटी ऑफ Kerala came into the spotlight when elders and youth organized a convention to preserve their endangered language and tradition. तांकर निजरो लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करिवा पे गोटे कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करले से ट्राइब सेथि पे माने न्यूज रे थिले. Okay, so the event highlighted the challenges faced by the tribal group as modern influences encroach on their ancestral lifestyle. एथि पे न्यूज रे थिले एथि तुमको ऑलरेडी लिखा हिची दिस कम्युनिटी इज फ्रॉम केरला. ओके सो केरला माने को रीजन हे गला केरला इज इन द वेस्टर्न घाट्स सो आंसर विल बी वेस्टर्न घाट. मुथुवन ट्राइब मन रखिबो दे आर बेसिकली फ्रॉम केरला व्हिच इज इन वेस्टर्न घाट्स. ओके नेक्स्ट AI powered chatbot अभे होची गोटे AI powered chatbot that has been launched by which organization को organization आको launch करिची National Investigation Agency, Intelligence Bureau, CBI और ED को organization आको launch करिची. Any idea? Any idea? किसी रेस्पॉन्स नहीं चलो देखिए. So CBI launches the AI chatbot Abhay.
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लॉन्च करिछि कोन पई टू हेल्प सिटीजन्स वेरीफाई ऑफिशियल नोटिसेस and avoid digital scams. Okay, it is unveiled by the Chief Justice of India Surya Kant. The initiative aims to curb rising frauds cases and strengthen the public safety using artificial intelligence. Okay, तो ये chatbot रो ना हैला अबे अभे. Okay, किए launch करिछि CBI या को launch करिछि. Clear? Central Bureau of Investigation will be the answer. Next, India's first petroglyph conservation park. Petroglyph conservation park is being established in which state or union territory? India रा प्रथम जे कोनो से भी जिनस बहुत important. First petroglyph conservation park. हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली. कौन हवा आंसर? Any idea? देखो सो एटा होची तमरो लद्दाख रे इनॉग्रेट कराइची. ओके, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना laid the foundation stone for the India's first petroglyph conservation park. कोठे exactly it is in ले रो सिंधु घाट रे एटा को कराइची. ओके, on the World Heritage Day to preserve the region's ancient rock art heritage. से एरिया रो तांकर जो रॉक आर्ट हेरिटेज टाकू प्रिजर्व करबा पे. ओके, से माने सेठी तमर बनेछंती इंडिया रो प्रथम पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क, जोठी ऑब्वियसली तुम एठी बुझी परथबो एंशिएंट रॉक आर्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करा जाय पारिबो. ओके, सो कोठी हेची exactly जदि हमें देखिबा सिंधु घाट which is in Leh, Ladakh on the banks of the Indus river. Okay, next, Hussain Sagar Lake is located in which city? बहुत easy ना रो बुझी पड़थबो तमे. हुसैन माने हैदराबाद, H for Hussain, H for हैदराबाद. हैदराबाद रे एंती नेम तमे बहुत देखिया को पाओ, राइट? सो हुसैन सागर लेक इज इन हैदराबाद. आंसर एटा हैला. न्यूज रे कोन पे थिला? बिकॉज इट इज एमिटिंग ए स्ट्रांग फॉल ऑर्डर एज राइजिंग समर टेम्परेचर ट्रिगर हेवी algal bloom. हेवी algal bloom देखिया को मिलची से पर्टिकुलर लेक रे, सेति पे एटा न्यूज रे थिला. सो वेयर इज दिस हुसैन सागर? इट इज इन हैदराबाद, तेलंगाना. ओके, सो इट इज एन आर्टिफिशियल लेक. आको टैंक बंड बेली भी कहा जाए. It lies on the tributary of river Musi. River Musi रो tributary रे ए लेक तमे देखिया को पाओ. ओके, एरा पूरा हिस्ट्री तारो एठी लेखा हैची. The lake was named after Hussain Shah Wali, okay, who was the chief engineer, and it was initially built to cater the irrigation needs. And तमे जदि देखिबो माने with year एटा बहुत polluted हवा को देखा गला. ओके, जनरली 1562 AD रे आको कंस्ट्रक्ट करा जायथिला ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह, हु वाज द फोर्थ रूलर ऑफ द कुतुब शाह डायनेस्टी. से ताको कंस्ट्रक्ट करथिले 1562 AD रे, माने केते पुराना भाबो. ओके, नेक्स्ट देखिबा थारू ट्राइब. थारू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन व्हिच इंडियन स्टेट? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार रे देखिया को पाओ. राजस्थान और गुजरात रे देखिया को पाओ ना. आसाम, मणिपुर, मिजोरम रे देखिया को पाओ ना. ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड. को एरिया रे को रीजन रे तमे जनरली थारू ट्राइब माने को देखिया को पाओ? थारू ट्राइब, एनी आइडिया? थारू ट्राइब. ओके, नो आइडिया. चलो, so the Lucknow bench of the Allahabad High Court set aside a district level committee's decision to reject the community forest right claims of the Tharu tribe. Tharu tribe मानकर community forest claims टाको reject कर देजी Lucknow bench of the Allahabad High Court. Okay, so obviously तमे एटू टिके बुझी परथो एटा को रीजन रो बेसिकली बिलोंग करे. जदी भी बुझी परनो अगेन म कहि दोची, मोस्टली से माने उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश आउ बिहार हेरे देखिया को मिले। ओके सो ऑप्शन थिला हमर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार ए राज्य रे आमे देखिया को पाऊ हमर थारू ट्राइब को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार ओडिसा रे तो नाही नॉर्थ स्टेट्स रे तमे एटा को देखिया को पाऊ। ओके चेंचू ट्राइब एनी आइडिया चेंचू ट्राइब कोठी देखिया को मिले? चेंचू ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच फॉरेस्ट रीजन? कमेंट रे कुहो ठीक हो भूल हो जहां भी हो बट एटलीस्ट ट्राई टू आंसर। चेंचू ट्राइब एनी आइडिया? देखो recently Chenchu tribals in Amrabad Tiger Reserve opposed relocation from forest area हैला से माने तांगर relocation पे मना करचंती citing livelihood concerns जदि से एरिया रु तांगे बाहर पड़िबे देन ताके चली परिबेनी तांगा कहबा हिसाब रे। सो कोठी माने बिलोंग करंती अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व कोठी देखो एठी लेखा भी हेछि दे प्राइमरीली रिसाइड इन द नल्लामलाई फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैला को फॉरेस्ट नल्लामलाई फॉरेस्ट व्हिच वाज आल्सो इन द ऑप्शन रे तमन थिला सुंदरबन फॉरेस्ट से माने रुहंती नल्लामला फॉरेस्ट रे रुहंती वेस्टर्न घाट रे रुहंती या अरावली फॉरेस्ट रे। तो आंसर विल बी नल्लामला फॉरेस्ट व्हिच इज इन आंध्र प्रदेश। ओके तो चेंचू ट्राइब तमे देखिया को पाइबो नल्लामला फॉरेस्ट व्हिच इज इन आंध्र प्रदेश। ओके they are one of the PBTGs of Andhra Pradesh by the way हैला PBTGs विषय रे हमें पढ़ी छु केतरा क्लासेस रे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को से माने बिलोंग करंती आंध्र प्रदेश रो। ओके एंड नॉट ओनली आंध्र प्रदेश बाय द वे तेलंगाना कर्नाटका ओडिसा रे भी तमे किछिटा एमती चेंचू ट्राइब देखिबा को पाओ। ओके दे हैज बीन क्लासिफाइड एज द प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड ग्रुप को लैंग्वेज से माने स्पीक करंती जनरली जेतु से माने आंध्र प्रदेश रे बिलोंग करंती दे स्पीक तेलुगु द द्राविडियन लैंग्वेज ऑफ दैट रीजन। ओके नेक्स्ट व्हाट इज डिलेनिया नागालिम रिसेंटली न्यूज रे देखा जायतिला कोन सेटा व्हाट इज दैट? इज इट ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज? इज इट ए टाइप ऑफ वायरस? इज इट न्यूली डिस्कवर्ड फिश माने स्पीसीज ऑफ फिश और इज इट ए ट्रेडिशनल मेडिसिन? कौन है एटा जिनसटा डिलेनिया नागालिम नार कौन लागुची? सो रिसेंटली गोटे नुआ प्लांट स्पीसीज देखिया को मिली मणिपुर रो कामजोंग डिस्ट्रिक्ट रे ता ना हला डिलेनिया नागालिम। सो इट इज बेसिकली न्यू प्लांट स्पीसीज मणिपुर रे डिस्कवर करा हेछि। नागालिम ना कोन पा दिया हेछि? नागा ट्राइब्स को रिफर करी कि नागालिम दिया हेछि नागा दिया हेछि आ लिम ता तमरो माने हैला लैंड। ओके रिफ्लेक्टिंग द प्लांट्स ओरिजिन इन ए रीजन predominantly inhabited by the Tangkhul Naga tribe near the Indo-Myanmar border. Okay, the species is currently known only from a single location, making it endemic to the area. गोटे सिंगल लोकेशन रे ताको देखिया को मिलिछि। आरो जदि हमें देखिबा माने ब्राइट येलो फ्लावर्स देखिया को हमें पाइबो और डबल सेरेटेड लीव्स देखिया को पाइबो ए प्लांट स्पीसीज रे। ओके मन रखिबो डिलेनिया नागालिम is basically a newly discovered newly discovered plant species. Okay, answer will be A. Clear? Next, Ayush Chintan Shibir was inaugurated in which city? Recently inaugurated hitila Ayush Chintan Shibir ko city re inaugurate hitila? सब जिस मोस्टली न्यू दिल्ली रे ही लॉन्च होता है राइट। तो यहाँ भी तुम दिल्ली रे ही होता चिंतन शिविर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनॉग्रेट करथिले। इट गिव्स एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इंटीग्रेशन विथ मॉडर्न डे हेल्थ केयर सिस्टम। आमे केमती ट्रेडिशनल मेडिसिन को
आमर मॉडर्न हेल्थ केयर रे इंक्लूड करि परिबा ओके सो तार मेन एम हैला टू रिव्यू एंड एक्सेस पास्ट एक्शन पॉलिसी एंड प्रोग्राम सिंस 2023 सिविर ए पर्टिकुलर जो 2026 रो सिविर हेतला तार मेन काम थिला 2023 परठू कौन कौन सब पॉलिसी सब चेंजेस सब करा हेची ए रिगार्डिंग ओके नेक्स्ट देखिबा व्हिच स्टेट इज होम टू इंडिया's फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया's फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट एनी आइडिया को स्टेट रे करा जायछि इंडिया रो प्रथम चिप फैब्रिकेशन प्लांट केरला कर्नाटका गुजरात और महाराष्ट्र ओके देखो बेसिकली आंसर होबो गुजरात द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज notified the country's first semiconductor fabrication plant at गुजरात रो कोठी गुजरात रो ढोलेरा रे ओके ढोलेरा इज द प्लेस इन गुजरात सिटी इटा सेटअप हबारो प्लानिंग एजी इट इज इंडिया's first semiconductor fabrication facility जो थरे कि तमरो एडवांस चिप गुडा को मैन्युफैक्चर करा जिवो domestically and it is being developed as a sector specific special economic zone focused on electronics and semiconductor production okay तो कोठी इटा मना जाउची ढोलेरा SIR special investment region which is in Gujarat okay तो एटा करले कोन हो obviously आमे import dependence reduce करिबा and आमे high tech manufacturing टा को boost करि परिबा World Chagas Disease Day is observed in which year? World Chagas Disease April 13, 14, 15, 16. Recently जाइछि Chagas Disease. कोठी कोठी माने कोन केबे World Chagas Disease Day is observed every year on April 14 to raise awareness around the disease and the impact it has on lives okay मन रखिबो April 14 date ता मन रखिबो okay it is also known as American trypsomaniasis it is an inflammatory infectious disease caused by the protozoan parasite trypanosoma cruzi okay तो parasitic disease एटा को parasite trypanosoma cruzi एटा बेले बेले पचार दिए क्वेश्चन रे चागस डिजीज ता को प्रकार डिजीज और जदि पैरासाइटिक डिजीज देन को पैरासाइट रु हुए से भी हमको मन रखिया को पड़ेबो ओके सो सीरियस हार्ट और स्टोमक प्रॉब्लम्स तमे एठी देखिया को पाइबो एंड एटा कहा ना रे दिया जेतला जने ब्राजीलियन फिजिशियन और रिसर्चर थिले कार्लोस चागस तांको ना रे ए डिजीज ता दिया जायथिला ओके प्रथम थर पे 14 अप्रैल जेतु डिजीज ता डायग्नोस हेतिला 1909 रे तो एवरी ईयर 14 अप्रैल रे ए डिजीज पई अवेयरनेस बनाया पे हमें सेलिब्रेट करू छु सेलिब्रेट माने कोन ऑब्जर्व करू छु वर्ल्ड चागास डिजीज डे अप्रैल 14 रे ओके सो आंसर विल बी अप्रैल 14 नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया's फर्स्ट डेडिकेटेड nuclear missile tracking and ocean surveillance ship बहुत important question INS Dhruv INS Kaveri INS Kavach INS Surya India रा प्रथम dedicated nuclear missile tracking and ocean surveillance ocean को भी surveillance करिवो और nuclear missile टा को भी track करिवो किए INS Dhruv, INS Kaveri, INS Kavach और INS Surya. Answer is INS Dhruv. Okay, so recently the Indian Navy has deployed its specialized missile tracking and ocean surveillance vessel INS Dhruv into the Arabian Sea immediately before Pakistan declared live firing window. Okay, तो से track कर दबो missile टा को भी track करि परिबो ocean टा को surveillance भी करिबो every time. It is India's first dedicated nuclear missile tracking and ocean surveillance ship.
जमा भी कंफ्यूज हबार नहीं, एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो। ओके, also it was commissioned on 10th September 2021. It was built by Hindustan Shipyard Limited, मन रखिबो, in collaboration with DRDO and NTRO. DRDO, NTRO और Hindustan Shipyard Limited मिसी केटा बनैथिले 2021 रे एटा कमिशन हेतला। आ वर्तमान एटा होची इंडिया रो प्रथम डेडिकेटेड न्यूक्लियर ट्रैकिंग एंड nuclear missile tracking and ocean surveillance ship. Okay, INS Dhruv मन रहिला। नेक्स्ट, कोन्याक ट्राइब को स्टेट रे देखिया को पाइबो तमे। कोन्याक ट्राइब नागालैंड, बिहार, ओडिशा, गुजरात। कोन्याक ट्राइब कोन्याक ट्राइब नागालैंड, बिहार, ओडिशा, गुजरात। देखो, सो रिसेंटली ए माने होचन तमर कोन्याक ट्राइब से माने कोन करचंती, in a preliminary investigation identified traditional herbal formulation used by the Konyak tribe of Nagaland for its anti-cancer potential. तो से माने जोटा आगरु से माने यूज करथुले ट्रेडिशनल हर्बल प्रोडक्ट्स गुड़ा को यूज करिकी एंटी कैंसर पोटेंशियल अच्छी तार से पर्टिकुलर हर्बल रो से कहउचंती, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल scientific insight into the indigenous medicinal practices. So a tribe माने सेटा बनेचंती, and a tribe माने कोठी बिलोंग करंती, इट लेखा हिची already, they are basically from the Nagaland. Okay, तो Konyak tribe मन रखिबो, they are found in which state? They are found in Nagaland. Okay, and reason context तभी मन रखिला कि कौन पे गोटे एमती ड्रग से माने कहचंती जोटा कि से माने बहुत आगरो यूज करथुले हर्बल फॉर्मुलेशन यूज करिकी सेटा केमते भी यूज कर जे परिबो सेटा तांगे हमको इनसाइट प्रोवाइड करछन। ओके, नेक्स्ट, सुसान कॉयल has been appointed as the first ever female chief of army of which country in April 2026? को कंट्री रो प्रथम फीमेल चीफ ऑफ आर्मी? अर्जेंटीना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चिली, बोलिविया। को कंट्री रो प्रथम फीमेल चीफ ऑफ आर्मी? सुसान कॉयल। एनी आइडिया? को कंट्री रो हिथिबे? So she is basically from Australia. Okay, so Australia has appointed Susan Coyle as its first ever female army chief. Okay, with the announcement made in April. She will officially assume charge in July, marking a historic step towards the improving gender representation within the Australian Defence Forces. Okay, clear? So, ऑस्ट्रेलिया रो प्रथम फीमेल आर्मी चीफ सुसान कॉयल मन रहिला। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वुली नेक्ड स्टॉक? वुली नेक स्टॉक रिसेंटली न्यूज रे थेला, तो तार IUCN स्टेटस कोन? रिसेंटली तमे स्पॉट भी हेथिला एटा थांजावो तमिलनाडु रे। सो इज इट क्रिटिकली एंडेंजर्ड? इज इट under the endangered list? Is it under the vulnerable list or near threatened list? Any idea? IUCN status कौन basically? Woolly neck stock. कौन? किसी आंसर नहीं?
So देखो, this is your woolly necked stock. Okay, recently ताको थंजावुर तमिलनाडु रे spot करा जायथिला. Rare sightings of the woolly necked stock are being reported from the paddy fields of the Thanjavur, Tamil Nadu. It is also known as white necked stork or bishop stork. It is a large wading bird belonging to the stork family Ciconidae. Okay, scientific name hela Ciconia or Ciconia episcopus. It is classified as near threatened under the IUCN Red List. ओके तो हमको क्वेश्चन पचार जाइथिला कि से आईयूसीएन रो को स्टेटस रे अछि. सो इट इज अंडर द नियर थ्रेटन माने विलुप्त हबा ऊपर अछि. ओके नेक्स्ट, द पेस सैटेलाइट मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? Jaldi. Space satellite mission has been launched by which space organization? NASA, China National Space Administration, European Space Agency, Indian Space Research Organization. Kahar eta? So this is basically of NASA. Space satellite mission ta mano rakhiba NASA ro eta. Okay. Next. ALH Mark III is a variant of which indigenous helicopter? को helicopter रो इटा होची गोटे variant. तो recently news देखियार पाइथिलो कि Hindustan Aeronautics Limited handed over 4 advanced light helicopter. इटा बहुत easy तमे guess भी करि परिबो. तो हॉल कोन करिला चारिटा advanced light helicopter MK3 maritime role helicopters to the Indian Coast Guard. Indian Coast Guard को देची चारिटा हैला. तो एटा को वेरी माने को पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर गोटे वेरिएंट ध्रुव, रुद्र, प्रचंड और चेतक. So this is again INS ध्रुव पढ़िथिलो. This is ध्रुव हेलीकॉप्टर. ओके तो ध्रुव एडवांस्ड हेलीकॉप्टर गोटे मैरीटाइम वेरिएंट हला advanced light helicopter MK3. Okay, these have been indigenously manufactured by Hall and recently news भी से थिला कि Hall चारिटा वर्तमान देची Indian Coast Guard को. It is a multi-role twin engine helicopter equipped for demanding maritime operations. Okay, next, Indravati Tiger Reserve कोठी अछि को एटा को. I need an answer for this. एटा त माने जानि थिबो Indravati Tiger Reserve सुनी थिबो. ओडिसा रे अछि ना छत्तीसगढ़ रे अछि ना आंध्र प्रदेश रे अछि? ओडी देखो इंद्रावती नदी रे तमरो फ्लो होची नो डाउट नवरंगपुर रे. त तमे भाबुथबो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी अछि नवरंगपुर रे. ना, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज इन छत्तीसगढ़. ओके, इंद्रावती नेशनल पार्क भी आउ इंद्रावती टाइगर रिजर्व दैट बोथ तमे सरे देखिया को पाइबो छत्तीसगढ़ रे. तो ओडिसा केबे मारी देबो नाही. इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती नेशनल पार्क सबु तमरो छत्तीसगढ़ रे अछि. ओके, so answer will be Chhattisgarh. Clear? Next, which state is the leading producer of makhana? Makhana को तमे fox nuts बेली भी कहो. तो सेटा को state is the leading producer of makhana? कोटी बहुत produce हुए. ओडिसा रे, हरियाणा रे, झारखंड रे ना बिहार रे? कोठी? Any idea? Answer will be Bihar. Okay, तो बिहार रे तमे देखिया को पाओ. It is the leading producer of makhana. ताको हमें fox nuts बेली भी कहो. Okay, next question. What is the theme of Poshan Pakhwada? Pakhwada 2026. Theme कौन? Poshan Pakhwada रो theme कौन थिला? Nutrition for all, healthy India, strong India,
maximizing brain development in the first 6 years of life, malnutrition free India. Answer will be maximizing brain development in the first 6 years of life. That was the main theme. Okay, 2026 रो थीम थिला. तो 9th April रे माने 9th April रो 23rd April एबे भी चली छी. एटा तमरो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एटा को लॉन्च करथिला. ओके, the main theme है maximizing brain development in the first 6 years of life. आउ कौन? Acknowledging that 85% of brain development occurs by the age 6. तो 6 वर्ष सुधा तमरो 85% of brain develop हो जाए. तो से 6 वर्षटा बहुत इंपोर्टेंट. गोटे छुआर प्रथम 6 वर्षटा बहुत इंपोर्टेंट. सो ए कैंपेन टा emphasizes that first 1000 days are the most critical period for physical growth, mental well-being and cognitive mapping. Okay, mission Poshan 2.0 under it asuchi. It is observed under the umbrella mission Poshan 2.0, which is the initiative tamane janithwa that seeks to converge efforts across all union ministries and states nutritional outcome taku improve kariba pai. Okay, so it is also a part of the Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan kebe launch heithila 2018 रे. तले पोषण अभियान अंडर रे मिशन पोषण अंडर रे हमें कोई परिबा पोषण पखवाड़ा. ओके, पोषण पखवाड़ा रो ए वर्षर थीम हैला एटा भूलिबनी. प्रथम 6 वर्षटा गोटे छुआ पे बहुत इंपोर्टेंट. सो एटा ही तांगर थीम टा भी. ओके, नेक्स्ट, India's first prototype fast breeder reactor co-state रे located. Recently, बहुत recently टा न्यूज़ रे थिला. इंडिया रो प्रथम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कोठी लोकेटेड अछि? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश. सो आंसर तो हबो हां, आंसर तो हबो तमरो कोन? तमिलनाडु रो कल्पक्कम रे एटा अछि. एटा न्यूज़ रे कोन पे थिला? बिकॉज़ इट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड द फर्स्ट क्रिटिकलिटी. फर्स्ट क्रिटिकलिटी माने एटा गोटे पॉजिटिव स्टेप हैला. फर्स्ट क्रिटिकलिटी माने कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन एठो आरंभ हैला. ओके, तो सब ठीक ठाक चली छी. एंड तमरो एटा हैला तमर जो कहला प्रोटोटाइप रेडी हो जाई छी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैला. तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली हमर जो इंडिया रो 3टा स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम अछि तारो सेकंड स्टेज. प्रथम स्टेज थाए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो थे कि तमरो नेचुरल यूरेनियम यूज करा जाए. नेचुरल यूरेनियम परे तमरो एठी स्टेज 2 रे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रे तमरो यूज करा जाए फ्यूएल कोन ना PU 239. ओके, एंड सेठो जहा तमरो बाहरला लास्ट रे तमरो एठी यूरेनियम 233 आ थोरियम 232 मिसे की मोर आउ अधिका यूरेनियम 233 देखिया को मिले. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस एंड ए जिनसटा वर्तमान सक्सेसफुली हे जाई छी माने स्टार्ट हे जाई छी तमरो कोठी इंडिया रो प्रथम जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अछि व्हिच इज इन कल्पक्कम से स्टार्ट हे जाई छी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे के ऑब्जर्व करा जाए? एबे जाई छी वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे केबे? आंसर विल बी April 7. ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे रो थीम कोन थिला मते कमेंट रखबो. ओके, April 7 रे तो हमें ऑब्जर्व करू एंड तार थीम कोन थिला मते कहबो. INS अरिधमान रिसेंटली न्यूज़ रे देखिया को मिलथिला को सबमरीन क्लास को से बिलोंग करे? कलवरी क्लास, स्कॉर्पिन क्लास, चक्रा क्लास और अरिहंत क्लास. जानि थिबो मोस्टली तमने कि INS अरिहंत हमर कमीशन करा जायथिला 2016 रे, व्हिच इज इंडिया's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. ओके, बैलिस्टिक सबमरीन. तो सेकंड हैला INS अरिहंत पर सेकंड आस्थला INS अरिघाट 2024 रे कमीशन करा जायथिला.
एंड वर्तमान कमिशन करा जाइछि आईएनएस अरिधमान। तो आईएनएस अरिधमान इज a nuclear powered submarine हैला थर्ड क्लास। आ को माने पर्टिकुलर क्लास को ये बिलोंग करूची अरिहंत क्लास। ओके प्रथम अरिहंत थिला प्रथम, देन अरिघाट, देन आसला तमरो अरिधमान। ओके तीनटा जाको ना ए रे ही स्टार्ट होची। नेक्स्ट देखिबा हम संपन्न प्लेटफॉर्म इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। को ऑर्गेनाइजेशन रो एटा होची गोटे इनिशिएटिव संपन्न प्लेटफॉर्म। कौन हम सो एटा तमरो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर रे आसुची हैला। एटा तो जानथिबो रिसेंटली तेलो फेलो बहुत न्यूज रे अछि। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मैंडेटेड पेट्रोल पंप टू सप्लाई E20 फ्यूल। तो E20 फ्यूल माने कोन 20% पेट्रोल 80% इथेनॉल, 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल, 50% इथेनॉल 50% पेट्रोल और पूरा 100% इथेनॉल। कौन E20 माने बुझ परथबो 20 ही रहइबो हैला आंसर रे 20 रहइबो बट 20% पेट्रोल ना 20% इथेनॉल। मन रखिबो ओनली 20% इथेनॉल। E20 माने इथेनॉल 20 राइट। सो 20% इथेनॉल को 80% पेट्रोलियम जदि मिसी जाए that becomes E20 fuel. Okay, last question for today. Agre, which is an anti-submarine warfare shallow water craft, has been indigenously designed and built by which shipyard? Okay, तो इटा होची बेसिकली गोटे shallow water craft किए बनेछि सेटा तुमको कहबार अछि किए बनेछि एटा। सब जिनस मोस्टली यही तुम बनाए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता GRC यही बन तुम आग्रे। ओके अच्छा कौन कौन इंपोर्टेंट डेज थे वर्तमान पर्यंत वर्ल्ड हेल्थ डे आम वर्तमान देखिलु। ओके विच इज इन 7th एप्रिल। ता छड़ा 1st एप्रिल ओडिशा डे आउ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। 2nd एप्रिल रे आमे ऑब्जर्व करू वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4th एप्रिल रे इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। ओके 5th एप्रिल रे नेशनल मेरीटाइम डे। ओके 10th एप्रिल रे वर्ल्ड होम्योपैथी डे एटा मन रखि देखो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज इन 10th एप्रिल। 11th एप्रिल रे नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे भी आम से दिन करूँ। 13th एप्रिल जानी थी समस्ते जलियानवाला बाग मसाकर डे। 17th एप्रिल वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। 18th एप्रिल वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके 21st एप्रिल आज के आज के तारीख आज कौन आज 22 तारीख थी तो आज होची वर्ल्ड अर्थ डे। ओके काली थिला तमरा नेशनल सिविल सर्विस डे और सेक्रेटरीज डे। ओके तो दिस वर ऑल द इम्पोर्टेंट डेज टिल नाउ। ठीक अच्छे तो आज क्लास हम ये एंड करिबा देखा हवा हमें नेक्स्ट क्लास रे। ओके थैंक यू एवरीवन।